हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज सुगंधा। आज के इस वीडियो में हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम पहले जीएस 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी हैव सर्टेन मेंस एग्जामिनेशंस इन सितंबर, जो कि यूपीएससी का भी है और यूपीपीसीएस का भी है। तो चलिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई हैव स्टार्टेड मेकिंग दिस करंट अफेयर्स सीरीज, जो कि मेंस रिलेटेड भी है और प्री में भी हेल्प करेगा नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में या किसी भी ऐसे पेपर में जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है। सो एक बार प्लीज ऑडियो वीडियो चेक करवा दीजिए। Some of you please confirm the audio video. Okay. So yeah, let's talk about the Indian laws on abortion. अभी हमने हाल फिलहाल देखा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये काफी न्यूज में रहा है, काफी चर्चा में रहा है, इसलिए ये मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। As we have seen in the news that Medical Termination of Pregnancy Act 2021 that has been amended and that was in news for some reasons. Let's discuss that very elaborately. Now, what was the reason ये act news में क्यों था? Let's go to the background and try and understand the reason behind it. So, in a significant step for women's right in the US, the Supreme Court overturned the landmark Roe versus Wade judgment of 1973. Right? एक रो वर्सेस वेड जजमेंट था यूएस में 1973 का। सुप्रीम कोर्ट ने वहां की इसको टर्न डाउन कर दिया है। क्या रीजन है इसका? पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि रो वर्सेस वेड जजमेंट ऑफ 1973 क्या था। ठीक है, सो रो वर्सेस वेड जजमेंट ऑफ 1973 which gave women in America the right to have an abortion before the fetus is viable outside the womb or before the 24 to 28 week mark. इस जजमेंट को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है। राइट? अब इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, बिकॉज ये न्यूज में था वहां की, बट देन हमने एमटीपी को भी न्यूज में काफी बार देखा। तो अब हम इसमें समझते हैं कि इंडिया में अबॉर्शन लॉज का बैकग्राउंड और इवोल्यूशन कैसे हुआ। राइट? सो 1960s की बात है। इट वाज इन द 1960s इन द वेक ऑफ अ हायर नंबर ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन, a higher number of induced abortion taking place, the Union government ordered the Constitution of Shanti Lal Shah Committee. Union government ने order किया composition of Shanti Lal Shah Committee. For what reason? To deliberate on the legislation of abortion in the country. This is when the first time abortion law formation या abortion law के बारे में पहली बार सोचा समझा गया, और कैसे इसका फॉर्मेशन हो, क्या क्या इसमें प्रोसीजर होंगे, क्या क्या इसमें लॉज होंगे, ये देखा गया। राइट? चलिए,
Now, to reduce maternal mortality owing to unsafe abortion, the medical termination of pregnancy was brought into force in 1971. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये? मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, अनसेफ अबॉर्शन को रिड्यूस करने, क्यों जो कि हो रहा था अनसेफ अबॉर्शन से, पीपल वर टेकिंग मेनी अनप्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स या कोई ऐसा और तरीका हो रहा था जिससे कि मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा था, राइट? तो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट was brought into force first time in 1971. Now, this law is an exception. It's a very important point. Please note this. This law is an exception to the Indian Penal Code provisions of 312 and 313. MTP Act 1971 is an exception to IPC Indian Penal Code section 312 and 313 and sets out the rule of how and when can a medical abortion be carried out. ठीक है, तो MTP Act का एक एक्सेप्शन था 1971 के दौरान कि कौन से IPC के सेक्शंस हैं जो कि इस एक्ट से के वर्च्यू से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार ये देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट डज IPC section 312 and 313 has to say. So under section 312 of IPC, a person who voluntarily causes a woman with child to miscarry is liable for punishment attracting a jail term of up to 3 years or fine or both unless it was done in good faith where the purpose was to save the life of the pregnant women. तो IPC section 312 ये कहता है anybody, any person who is liable for punishment, why, if he causes a woman with child to miscarry, except the fact that that miscarriage has been done in good faith to save the life of the women. अगर ये रीजन है कि उस women को बचाना था, good faith में कर रहे थे, then it's an exception. Otherwise, that person would be jailed for a term of 3 years, or he would be fined, or that there can be both the punishments, right? Let's see the section 313 of the IPC. So section 313 of the IPC states that a person who causes the miscarriage without the consent of the pregnant woman, whether or not she is in the advanced stage of her pregnancy, shall be punished with life imprisonment or a jail term that could extend to 10 years as well as fine. So what does section 313 says of IPC? It says कि if a person is the reason behind miscarriage without the consent of the pregnant women, that person would be liable and that person would be having the punishment. He should be punished with life imprisonment or a jail term that could extend to 10 years as well as fine. ठीक है, so 312 and 313 were the exceptions in the Medical Termination Pregnancy Act of 1971. Right. Now, let's talk about the MTP Act of 1971 and then we'll discuss about the amendments and the new updates, new provisions that has been added.
ठीक है, चलिए। तो MTP Act it allows for termination of pregnancy up to maximum of 20 weeks only. This is the most important aspect. आपके मेंस आंसर में या इफ प्रीलिम्स में किसी भी एग्जामिनेशन में अगर ये पूछता है, यू मस्ट नो क्लियरली द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ द एक्ट्स, जो अमेंडमेंट था और जो एक्ट बना था। we'll see फर्दर कि अमेंडमेंट में ये 20 वीक्स चेंज होके कहाँ जा रहा है, राइट? सो प्लीज रिमेंबर द फैक्ट्स। इस करंट अफेयर्स में, इस अपडेट में फैक्ट्स ही इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस in the act and in the amendment. So MTP Act allows for termination of pregnancy up to maximum of 20 weeks only. The Kerala High Court has allowed for termination of a 21-week pregnant woman, a victim of rape. So she was a victim of rape, and that's the reason the Kerala High Court has allowed the termination of pregnancy when it was of 21 weeks. एक्ट क्या कह रहा है? एक्ट कह रहा है मैक्सिमम 20 वीक्स में टर्मिनेट हो जानी चाहिए, बट केरला हाई कोर्ट हैज अलाउड फॉर अ टर्मिनेशन ऑफ 21 वीक्स pregnancy, right? So in this context, this is the context of whole news. This is the context. There is a bill pending in Parliament that seeks to extend the termination of pregnancy period from 20 weeks to 24 weeks, making it easier for women to safely and legally terminate unwanted pregnancy. Reason चाहे जो भी हो. So there was a bill pending in the Parliament कि इस 20 weeks से बढ़ा के इसको 24 weeks कर दिया जाए, ताकि women की safety और legally दोनों तरीके से हम देख पाए. Now let's यहाँ पे दिया है MTP Act जो कि 1971 का है. तो under section 3 clause 2 of MTP Act 1971, a pregnancy may be terminated by a registered medical practitioner where the length of the pregnancy does not exceed 12 weeks. This has been mentioned in MTP Act of 1971, right? Where the length of the pregnancy exceeds 12 weeks but does not exceed 20 weeks. There are two conditions given. Firstly, it could be terminated only by a registered medical practitioner. Second is where the length of the pregnancy does not exceed 12 weeks. And third condition is where the length of the pregnancy, if exceeds 12 weeks but does not exceed 20 weeks. So in this case, अगर ऐसा कोई case बन रहा है, what will happen in this case? ठीक है? In this case, the abortion will take place if not less than 2 registered medical practitioners are of opinion. This is the important criteria. ठीक है? इस केस में abortion तभी possible है जब if not less than 2 medical practitioners are of opinion that the continuance of pregnancy would involve a risk to the life of the mother, the pregnant woman, her physical or mental health, or there is a substantial risk that if the child were born, it would suffer from some sort of physical or mental abnormality to be seriously handicapped. ठीक है? यहाँ conditions याद रखने की जरूरत है. कई बार क्या होता है, मेंस में तो चलिए आता ही आता है, प्रीलिम्स में भी ऑप्शंस कई सारे ऐसे दिए रहेंगे और बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं. आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उन ऑप्शंस में कि ये 1971 के बारे में बात कर रहा है या 2021 के बारे में बात कर रहा है. तो we have understood कि पहला कंडीशन है कि 12 वीक्स एक्सीड ना करें, and even if the length goes beyond 12 week, it must not exceed 20 weeks, right?
And then the third condition is, इस case में if the abortion is to happen, it has to be happen only when there are two medical practitioners who are of the opinion कि if the pregnancy is continued, there would be a substantial risk to the mother and to the child as well, be it mental, be it physical, or the child might be having some sort of physical handicap problems and all, mental problems. ठीक है? This was about the MTP Act of 1971. Now let's talk about the new amendment which was in the news recently. Right? Please excuse me. Yes. So let's just go through the new Amendment Act, which was there in news recently in 2021. So here the new amendment says that under 2021 Act, medical termination of pregnancy is permitted if it is backed by medical opinion and is being sought for at least one of the reasons. There are three reasons listed, right? And the termination of pregnancy could only be possible if the reason is backed by these 3 points. So let's go through these following reasons. First one is if continuation of pregnancy would involve a risk to the life of the woman, the pregnant woman. Second is if its continuation would result in grave injury to the woman's physical or mental health. Third is if in the case of a substantial risk that if the child was born, it would suffer from serious physical or mental abnormality. These are the reasons which we have seen in the past, in the 1971 Act also. But we would also see what is the difference. Now, the Act proposes that the requirement of the opinion of one registered medical practitioner instead of two or more, जो कि था 1971 के केस में. There was a condition that the opinion must be backed by at least two medical practitioners. But now in this 2021 Amendment Act, it has been stated that the opinion of one registered medical practitioner is required instead of two or more for termination of pregnancy up to 20 weeks of gestation. Now, this fourth point is it introduces, this is the amendment, it introduces the requirement of opinion of two registered medical practitioners for termination of pregnancy of 20 to 24 weeks of gestation. So for 20 weeks of gestation, it only is its requirement is only of one medical practitioner, right? And for beyond 20 weeks up to 24 weeks, it is requiring two medical practitioners, right? It also has enhanced the gestation limit for special categories. एक special categories का एक point इसमें ऐड किया गया है जहां पे gestation limit को enhance किया गया है. किस लिए किया गया है? Of women which include survivors of rape, victims of incest and other vulnerable women like differently abled women and minors. So ये एक स्पेशल कैटेगरी रखी गई है कि कोई अगर रेप विक्टिम है, कोई इंसेस्ट का विक्टिम है या कोई वल्नरेबल वुमेन है, डिफरेंटली एबल्ड या कोई माइनर है, उस केस में जेस्टेशन लिमिट को एनहांस करके उसको एक
स्पेशल लिमिट का दर्जा दिया गया है। Now, let's see what happens if the limit crosses beyond 24 weeks. So, if the pregnancy has to be terminated beyond 24 weeks gestation, beyond 24 weeks gestational age, it can only be done on the grounds of fetal abnormalities. There is only one single ground which is allowed to be made if there is any sort of abnormality possible with fetus. ठीक है, यहाँ मदर का ग्राउंड एज सच नहीं दिया गया है अगर 24 वीक्स क्रॉस हो रहा है तो। इसमें भी if there is a possibility of abnormality to the fetus, अगर ऐसा कोई ग्राउंड बन रहा है जहां पे फीटस की एबनॉर्मेलिटी पॉसिबल है बियॉन्ड 24 वीक्स, ठीक है, तो भी एक 4 मेंबर बोर्ड, मेडिकल बोर्ड रिक्वायर्ड होगा, वहां पे सेटअप किया जाएगा। If a 4 member medical board as set up in each state under the act gives permission to do so, this means कि हर स्टेट में there has been a 4 member medical board set up already, and for a pregnancy that has to be terminated beyond 24 weeks of gestational age on the grounds of fetal abnormalities, if this 4 member board permits, then only the termination is possible, right? Also, unmarried women can access abortion under above mentioned conditions because it does not mention the requirement of spousal consent. Spouse की consent यहाँ नहीं है किसी भी केस में, तो unmarried women भी access कर सकती हैं इन सारे rules को, इन सारे laws को, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि क्या कभी इस एक्ट में जुडिशियल इंटरवेंशन रहा है, ठीक है। Have there been any judicial interventions made in the cases of abortion? So yes, बहुत ही एक लैंडमार्क केस था in 2017, right to privacy judgment, Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India केस, बहुत important केस है। Supreme Court held that the decision by a pregnant person on whether to continue the pregnancy or not is a part of such a person's right to privacy as well, and therefore right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. इसका मतलब जब केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एंड अदर्स चल रहा था, उस केस में राइट टू प्राइवेसी जजमेंट आई थी, जिसमें ये पॉइंट कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द डिसीजन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन ऑन वेदर टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और नॉट, ये बिल्कुल प्राइवेट मामला है, ये राइट टू प्राइवेसी में आता है एंड देयरफॉर राइट टू लाइफ में भी आता है, because we already know right to privacy, comes under Article 21, which is right to life, ठीक है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट पर्सन का डिसीजन है, जो भी है, वो उनका प्राइवेट अफेयर है एंड नोबडी इज टू बी इंटरफेयर्ड, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो कंप्लीटली उनका प्राइवेट अफेयर है, व्हिच आल्सो देयरफॉर इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, काफी अच्छा एक ये इंटरवेंशन था। चलिए लास्ट पार्ट इस केस का बात कर लेते हैं, जहां पे क्रिटिसिज्म्स के बारे में बात किया गया है। एमटीपी एक्ट के क्रिटिसिज्म्स को देखा गया है कि क्या क्रिटिसिज्म्स हैं, ठीक है।
So criticisms against the abortion law, let's study. So there was a study conducted by Lancet, जहाँ पे ये स्टेट किया गया कि 15.6 million abortions were accessed every year in India as of 2015. This is the data given by Lancet. बहुत important है. You can quote such data in your answers. You can quote such data in essays, right? So 15.6 million abortions were accessed every year in India as of 2015. Now, the MTP Act requires abortion to be performed only by doctors with specialization in gynecology or obstetrics, right? तो MTP Act ये कह रहा है कि abortion सिर्फ उन डॉक्टर्स से पॉसिबल है, उन वो डॉक्टर्स ही परफॉर्म कर सकते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन गायनेकोलॉजी में है या ऑब्स्टेट्रिक्स में है, ठीक है। अब ये देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डेटा क्या कहता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2019-2020 रिपोर्ट आई थी ऑन द रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, जो कि इंडिकेट करती है कि देयर इज अ 70% शॉर्टेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट इन रूरल इंडिया। 70% शॉर्टेज है गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट का रूरल इंडिया में, ठीक है। As the law does not permit abortion by will, very important point. As the law does not permit abortion by will, the critics say that it pushes women to access illicit abortions under unsafe conditions. Statistics put the annual number of unsafe and illegal abortions performed in India at 8 lakhs, many of them resulting in maternal mortality. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि क्योंकि एक्ट जो है वो एक्ट विल परमिट नहीं कर रहा है अबॉर्शन का, देयर नीड्स टू बी सर्टेन ग्राउंड्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। विल कोई ग्राउंड नहीं है, अपनी विल पे यू कांट गेट योर अबॉर्शन डन। तो क्रिटिक्स ये कहना है कि ये फोर्स कर रहा है विमेन को कि वो इलिसिट तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से और अनसेफ तरीके से अबॉर्शन को परफॉर्म कर दे, जिसका डेटा इंडिया में 8 लाख है, मेनी ऑफ देम रिजल्टिंग इन मैटरनल मोर्टालिटी, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी इन इंडिया, स्पेशली इन रूरल इंडिया, राइट। सो आई होप कि ये पूरा एक्ट क्लियर है with clear differentiation in between the 1971 and the 2021 Act, ठीक है। Next, in the next video we will be discussing about the current topics जो कि GS2 से related हैं and which were in news big time। Anti-defection था जो अभी भी है, गवर्नर के ऊपर काफी important है, Section 69 of IT Act। ये 3 topics I'll be discussing in the next video. So I'll see you, and if you have any doubt regarding this topic also, please post your doubts in the comment section and I'll try to address it, right? Thank you, and I'll see you in the next video.